Hi friends and students, welcome all of you in our channel Tarang Physics. I am CP Sharma with a new topic. We have already discussed about the capacitance of a parallel plate capacitor, and also we have discussed capacitance of a parallel plate capacitor when we introduce or fill a dielectric slab between the plates. Now today we will discuss next topic of this chapter, combinations of capacitors. Now combinations of capacitors. Combinations of capacitors, it is of two types. First is series combinations, or second is parallel combinations. Now let us see discussion of series combinations. In series combination, first plate of a capacitor is connected with positive charge. Second plate of that capacitor will be negatively charged due to induction method. Now this plate is connect to the second capacitor. First plate of that capacitor is positive charge due to induction. Second plate of second capacitor will be negatively charged, as so on. ये चलता चला जाएगा, आगे बढ़ता चला जाएगा. क्या कि फर्स्ट प्लेट जो रहेगा वो पॉजिटिवली चार्ज रहेगा, सेकंड प्लेट नेगेटिवली चार्ज रहेगी. इस टाइप से हम इसको कंबाइंड कर देंगे. हम ये भी कह सकते हैं कि फर्स्ट प्लेट के लिए मैंने कितना चार्ज दिया, plus q charge is given to the first place due to induction. Second plate become negatively charged. It is connected to the second capacitor of first plate. Second plate of first capacitor connected to the second plate of first plate of second capacitor. Then due to induction, second plate also become negatively charged. Now third capacitor, capacitance of first capacitor is C1, or capacitance of second capacitor is C2, and capacitance of a third capacitor is C3. If we use B potential, and ऐसे भी हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं. this one is बैटरी की यूज कर लीजिए. ये बी पोटेंशियल है. जब बी पोटेंशियल सीरीज में रखेंगे तब कुछ चेंज देखने को मिलेगा. इन सीरीज इफ क्यू चार्ज इज गिवन टू द फर्स्ट कैपेसिटर के लिए हम क्यू चार्ज देते हैं, तो फर्स्ट कैपेसिटर क्यू चार्ज होगा, वो ट्रांसफर हो जाएगा एज इट इज क्यू C1 C2 C3 तीनों कैपेसिटर्स में क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा. देन वी कैन से दैट चार्ज कैन नॉट बी डिवाइडेड इन series combination of a capacitor. Then potential in series combination potential divides with capacitance, the capacitor of in series combination, potential divides with each capacitor. Then potential B is equal to B1 B2 and B3. Now total potential end of these capacitors will be B is equal to B1 plus B2 plus B3. इस टाइप से जो उसका पोटेंशियल होगा वो डिवाइड हो जाएगा. यू नो पोटेंशियल ऑफ फर्स्ट capacitors if C1 is the capacitance, then B1 is equal to Q upon C1, comma B2 is equal to Q upon C2 for the second capacitor, and V3 is equal to Q upon C3.
बिकॉज चार्ज डिवाइड नहीं होता है इन सीरीज में, तो पुट कर दीजिए, तो B इज इक्वल टू Q अपॉन C1, Q अपॉन C2 एंड Q अपॉन C3. If we use only one capacitor in place of three capacitors, then potential will be B is equal to Q अपॉन C. नेट कैपेसिटेंस, नेट पोटेंशियल होगा किसका, इन तीनों का, B is equal to Q upon C. Now put this value from equation first. वैल्यू किसकी पुट कर दीजिए, पुट द वैल्यू ऑफ V in equation first in place of V. Then Q upon C is equal to Q upon C1, Q upon C2 and Q upon C3. Now Q is common, then 1 upon C plus 1 upon C2 plus 1 upon C3. This cancel by this. 1 upon C, 1 upon C1, 1 upon C2, 1 upon C3. Now we get a required capacitance. This capacitance is called the equivalent capacitance. Of three capacitors. By this formula we calculate the combinations in series combination capacitance of these capacitors. इन capacitors की हम combinations अगर सीरीज रहा हो तो इसकी कैपेसिटेंस हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं. आई थिंक मैं समझता हूँ आपको समझ में आएगा, इसको नोट करिए. देन वी विल डिस्कस कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर्स. Okay, now let's be start combination of capacitors in parallel form. Three more than two capacitors are connected in parallel. This figure shows the parallel combination. Because this one is positive due to induction, negative. It is also connected to the negative, it is positive terminal. All positive plates are connected with our terminal to the positive terminal. All negative plates of these capacitors with the negative terminal. If the capacitance of first capacitor is C1, second capacitor का capacitance C2 and capacitance of a third capacitor is C3. If it is connected to a cell or battery. Now this one is it is key. B potential is given to this one is potential in parallel combination remains constant, but the charge divided with accordance with the capacitance of each capacitor. If we give the plus Q charge to these capacitors, then it divides according to the capacitance of a capacitor Q1, Q2 and Q3. And now come out from these capacitors charge Q1, Q2 and Q3, or finally this charge meet at this point, and now we get charge Q. In parallel combination, charge divides with accordance to the capacitance of a capacitor, but potential remains constant. Then charge Q is equal to Q1, Q2 plus Q3. If capacitors have
कैपेसिटेंसेस C1, C2 and C3 capacitances. Then charge on each capacitor. Q1 is equal to C1B because B is same, because B is constant, remains same in parallel form. And charge on second plate will be C2B and charge on third plate is C3B. Then Q is equal to C1B plus C2B plus C3B. If we use only one capacitor in place of three capacitors, then equivalent charge or total charge will be Q is equal to CB. Now put there Q is equal to CV, then CV is equal to C1B plus C2B plus C3B. Yes, look at there. CB is equal to V is common in all capacitors. C B C1 plus C2 plus C3. C cancel, B cancel by B. Now we get equivalent capacitance C plus C2 plus C3. This is the equivalent capacitance in parallel form. पैरेलल फॉर्म में जो कैपेसिटेंस होगी वो अलजेब्रिक मेथड से ऐड हो जाएगी, प्लस 1 2 3 एस वन चलता चला जाएगा जैसे वो ऐड होता चला जाता है. मैं एग्जांपल लेता हूं, जरा देखिए. C1 इज इक्वल टू 2 माइक्रोफैरड, C2 इज इक्वल टू 3 माइक्रोफैरड एंड C4 इज इक्वल टू 4 माइक्रोफैरड. नाउ equivalent capacitance in parallel form 2 microfarad plus 3 microfarad plus 4 microfarad is equal to 9 microfarad. It is clear that equivalent capacitance in series form is greater than to the greatest capacitance of the given capacitor. जो कैपेसिटर दे रखे हैं उनकी मैक्सिमम जिसकी कैपेसिटेंस होगी उससे भी बड़ा आंसर हमें मिलेगा इन पैरेलल फॉर्म में. बट इन सीरीज फॉर्म में देख लीजिए जरा, C1 इज इक्वल टू इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन सीरीज में 1 अपॉन C इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 2. मैं माइक्रोफैरड नहीं लगा रहा हूं, प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 4. एलसीएम यूज करेंगे, कितना आएगा 12 2 6 टाइम्स 2 4 टाइम्स 4 divided by 12 in 3 times multiply 1. This one is. Now we get 6 10 13 upon 12 1 upon C. रेसिप्रोकल करिए इसको 12 upon 13. आंसर मिलेगा मेरा 1 से भी कम मिलेगा, लेस देन 1 होगा 13 बन जा पॉइंट लिखेंगे. और वैसे हम नहीं डिवाइड होगा, वो आपको बताया 13 9 कितना होता है 117, तो 9 लिख लिए 0.9. मिनिमम कैपेसिटेंस कितनी थी मेरे पास 2, मिनिमम कैपेसिटेंस 2 थी, लेकिन मेरा जो आंसर आया इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आई मिनिमम से भी मिनिमम वैल्यू मुझे मिली 9 माइक्रोफैरड. इस टाइप से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर्स इन सीरीज फॉर्म एंड पैरेलल फॉर्म. आई थिंक मैं समझता हूँ आपको समझ में आया होगा. प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए और उसको आगे बढ़ाते रहिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.